Hello everyone, how are you all? I hope you will be fine and safe at your homes. I am your English teacher, Nikhil Kumar, and today I am going to teach you a very interesting poem from 9th class literature textbook Beehive, and the name of the poem, you can see the title written over on the blackboard. What is the title? Can you see? Yes, The Road Not Taken by Robert Frost. The very first poem of 9th class literature textbook Beehive. Let us start it. If I talk about Robert Frost was an American poet who writes simply but insightfully about common and ordinary experiences. This poem is about the choices that every person makes in his or her life, and it is the choices that a person makes in his life that shapes his destiny or the future of that person. Let us start the poem line by line. Please pay attention to my words. If you will pay attention to my words, I don't think there will be any problem you have to face later while understanding this poem. The poet says, two roads diverged in a yellow wood. Once the poet was passing through a forest. Actually, he was walking on a road, and at some point of a time, that road, for example, the poet was walking on such kind of a road, and he reached at a point where the road was diverged in two different directions. One road went in this direction and the other road went in this direction. Two roads diverged. Diverged means, I am writing the English meaning of this word, separated and took a different direction. This is the meaning of the word diverged. You can say forked also. कि ये जो दो सड़कें हैं वो बिल्कुल कहते हैं विपरीत दिशा में कहते हैं जा रही थी. वो एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा हुआ था, उनके डाइवर्जन पॉइंट पे. In a yellow wood means forest with decomposing leaves. It was autumn season, and most of the trees had withered and their leaves were fallen on the ground. That's why it is written over here, a yellow wood. So he was walking on a road, and the road at one point diverged in two different directions, and the poet was standing there at the divergent point. And he was thinking deeply which road he should take. And he was feeling a bit sorry, he was regretting, I could not travel both. Because he was a single traveler, he was only one person, and there were two roads in front of him. So it was natural that he can't travel both these roads. He can't take both the roads at the same time. अकेला आदमी है वो, और ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो उन दोनों सड़कों पे नहीं चल सकता है. इसलिए वो थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा है कि मैं इन दोनों सड़कों पे नहीं चल सकता हूँ. एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वो एक अकेला यात्री था. लॉन्ग आई स्टूड, who is I here? In two times I have come. So here who is I? The poet Robert Frost. लेकिन मैं काफी लंबे समय तक कहते हैं मैं वहां पे खड़ा रहा. Long I stood and looked down one as far as I could. One means the path, the road. और जो दो सड़कें थी उसमें से एक सड़क की तरफ कहते हैं मैंने देखा. As far as I could, जहां तक कहता मैं देख सकता था, जहां तक उसकी नजरें जाती थी. To where it bent means curved,
जहां पे ये कहता है एकदम से मुड़ा हुआ था, इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मीनिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड bushes। और कहता है जहां तक मैं देख सकता था मेरी नजरें, मैंने कहता है उस सड़क को देखा, और कहता है कुछ दूर जाने के बाद ये जो रास्ता है वो एकदम से मुड़ गया, और वहां पे बहुत ज्यादा कहता है घनी, कहता है कुछ पौधे और झाड़ियां उगी हुई थी, वहां पे जाके कहता है ये समाप्त हो गया। मतलब मेरी नजरें वहां तक उस पॉइंट तक देख सकती थी। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेंजा। एंड हियर द रोड, दिस वर्ड सिंबलाइजेस द लाइफ ऑफ अ पर्सन। Let us start second stanza. Then took the other. The poet was standing there at the divergent point of a road, and there were two roads in front of him. He was in dilemma. He was confused which road he should take. He was standing there, and he was a single person, अकेला व्यक्ति है, and he was feeling sorry that he couldn't travel both the roads at the same time. Then he looked down one road, and as far as his eye could see, and at a point the road disappeared behind the bushes and the plants that were growing there. उसके बाद कहता है दूसरे सड़क की तरफ वो देखता है, then took the other, फिर दूसरी सड़क की तरफ देखा उसने, just as fair means as गुड इक्वली एज द अदर रोड। कहता है वो जो रोड था दूसरे सड़क जिसकी तरफ मैंने देखा वो भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो दूसरी सड़क थी पहले वाली। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम मींस बेटर ऑप्शन। और कभी ऐसा सोचता था कि शायद देखने में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों सड़कें मोर और लेस दे वर लुकिंग सेम, लेकिन वो सोचता था कि जो दूसरी सड़क है वो ज्यादा बेहतर थी उसके लिए जाने के लिए। बिकॉज रीजन क्या था, इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मीन्स ग्रास वॉज ग्रोइंग ऑन दैट पाथ, एंड यू नो व्हेन ग्रास इज ग्रोइंग ऑन ए पर्टिकुलर पाथ इट मीन्स दैट पाथ इज नॉट सो मच यूज्ड बाय द पीपल। जिस रास्ते में घास उगी होती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि भाई वो जो रास्ता है लोगों के द्वारा इतना इस्तेमाल किया हुआ नहीं है। जनरली क्या होता है, जिस रास्ते पे कॉमन पाथ होता है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं उस पे कोई भी घास आपको नहीं दिखती है। तो कहता है कि बिकॉज इट वाज ग्रासी, दूसरी सड़क के बारे में बात कर रहा है, तो उस पे बहुत सारी घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर मींस, आई एम राइटिंग द मीनिंग हियर, प्लीज पे अटेंशन, हैव नॉट बीन यूज्ड या हैव नॉट यूज्ड। और ये जो सड़क है वो ज्यादा इस्तेमाल की हुई नहीं थी, दो हालांकि एज फार दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन कभी कहता है कि अगर ध्यान से देखा जाए, और कहता है वहां पे कुछ दूर चलने के बाद उसने ये पाया कि वास्तव में ये सिर्फ उसके सोचने का फर्क था, वरना कहता है जो दोनों सड़कें थी वो लगभग समान रूप से ही घिसी हुई थी। वॉर्न का मतलब डैमेज आप कह सकते हैं। So in the second stanza, the poet looked towards the other option, the other road that was in front of him, and he was thinking this road is better than the road that he was looking at earlier, because the road was looking fresh, grass was growing on it. But after some time he realized that there was not so much difference between these two roads, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही सड़कें लगभग एक समान सी है। We have finished the explanation of two stanzas of the poem. Let us start the third stanza. In the previous stanza, stanza number 2, I told you that the poet was standing and he decided to choose
a path, a road on which grass was growing. It was an indication that the path was not used by so many people. It shows that the poet was of adventurous nature. He was such kind of a person who likes to accept the challenges, who likes to have some risk in his life. And my dear students, this is the fact of the life, that if a person has tendency to take the risk, only that person can hope to achieve something big or extraordinary in his life. If you will follow an ordinary path in your life, then you can't hope to achieve extraordinary or big things. You will live a common life, just like anybody else. But those persons who dare to take risk in their lives, who wants to do something different, the other persons, their paths, their ways are also different from them. So when the poet decided to take the less traveled path, it shows that he was a man of adventurous nature. He wants to take risk in his life. Let us start the third stanza. And both that morning equally lay in leaves. No step had trodden black. Trodden black means walked over. पैरों से कुचली हुई हो, आप बोल सकते हैं। और उस सुबह जब कवि वहां पे खड़ा हुआ था, ठीक कहता है उस बिंदु पे जहां दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, और कहता है जो दोनों सड़कें वो समान रूप से ही कहता है थी, कोई ज्यादा अंतर नहीं था, और दोनों सड़कों के ऊपर पत्तियां गिरी हुई थी। और उस दिन जब वो वहां खड़ा हुआ था, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वहां से कोई नहीं गुजरा था, बिल्कुल जो लीव्स है वो कुचली हुई नहीं थी। इसलिए लिखा हुआ है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ मीन्स बोथ द रोड्स इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, देयर वाज नो साइन ऑफ द फुटप्रिंट्स वॉक्ड ओवर दीज लीव्स। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर। और कवि कहता है कि the poet decided to choose which path? The second one, which had grass and which was not wanted here. तो कहता है कि ठीक है, कवि कहता है कि अरे जो पहला वाला सड़क है ना, जो पहली जो सड़क थी, जो वो दूर तक जिसने देखा कवि ने, और जो कहता है झाड़ियों और पौधों के बीच में जाके कहीं पीछे गायब हो गई थी, उसके पीछे एकदम से समाप्त हो गई थी, कहता है उस सड़क को आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर, किसी और दिन कहता है उस सड़क पे मैं चलूंगा, उस रास्ते पे, आज मैं इस सड़क पे चलता हूं जो दूसरी वाली है। Yet knowing how way leads on to way, हालांकि कहता है मैंने कहा, he said that I would take that path for some other day, I will go on that path, लेकिन कहता है he knows the reality, वो जानता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, this is not possible at all. On these two paths, these two roads are the choices that a person has to make in his lives. And you know when a person makes choices out of the given options, and these choices decide the destiny of that person life, which direction his destiny would take, and there is no chance of coming back and choosing the other options that he had left earlier. और ऐसा बिल्कुल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है कि आप किसी रास्ते पे बहुत आगे निकल जाओ और फिर वापस आके जो रास्ता आपने छोड़ दिया है उस पर आप दोबारा चल सको, ऐसा संभव नहीं होता है। इसीलिए वो बोल रहा है येट नोइंग, वो जानता है कि जब वो एक सड़क पे, सपोज he decided to go on this road, and further this road will be divided into so many roads and he will keep moving on the roads ahead, और ऐसा कोई चांस नहीं है कि फिर वो वापस आ सके और फिर ये किसी दूसरे रास्ते पे चल सके जो उसने उस दिन नहीं चुना था, नहीं लिया था। I doubted if I should ever come back. Doubted means suspected. तो मुझे शक है कि वो कह तो रहा है कि कभी फिर आऊंगा, इस सड़क पे चलूंगा, लेकिन उसे खुद संदेह है कि क्या कभी वो ऐसा कर पाएगा, क्या वापस आके कभी दूसरी सड़क पे चल पाएगा। I shall be telling with a sigh. Sigh means deep breath. Deep breath. गहरी सांस, गहरी आह। Nobody knows. In our life,
we have to take the decisions instantly. There is no time. And in some situations, you may get some time, but the fact is that you have to take the decisions, you have to make the choices. And nobody knows whether his choices, whether his decisions will be fruitful or not. Only the time can tell that. Okay, whatever a person has thought, and in regarding that terms, he has taken some decisions. So that decision has proved fruitful or not, only the result can tell, and it will take some time. In some cases, it takes long time to get the results. So nobody can tell that the options made by a particular person is right or wrong. तो कहता है ये किसी को मालूम नहीं होता कि किस व्यक्ति की जो चॉइसेस है, जो डिसीजंस है, वो सही हैं, क्योंकि ये तो एक भविष्य की बात है, समय ही बता सकता है कि उसका परिणाम उसके पक्ष में आएगा या नहीं। तो कभी भी कह रहा है कि उस दिन उसने उस सड़क को चुना जो कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा इस्तेमाल की हुई थी, जिस पे घास उगी हुई थी, और कहता है कि वो मेरा डिसीजन फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, साई मींस डीप ब्रेथ, समवेयर एजेस एंड एजेस, हेंस, हेंस मतलब हेयर इन फ्यूचर, और भविष्य में कहता है बहुत बहुत, कहता है लंबे समय के बाद कभी, कहता है गहरी आह के साथ, कहता है मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई एक बार मैं जा रहा था ऐसे ऐसे जंगल में से, तो जो सड़क है, the two roads diverged in a wood, एक जंगल में, कहता है दो सड़कें जा रही थी, and I took the one less traveled by, और मैंने वहां पे दो रास्ते थे मेरे सामने, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ था, and that has made all the difference, और उसी चॉइस ने, उसी डिसीजन ने, उसी रास्ते पे जिस पे मैं चला, उसने कहता है मेरे जीवन को एक नई दशा और नई दिशा। So this is the poem, and the message that is conveyed through this poem is very strong, that while making choices, while taking decisions, we have to think very wisely, we have to just analyze the pros and cons of every particular aspect of that decision, and then we have to take that decision, because the decisions and the choices that we make in our life decides the destiny of a person's, decide the course of a person's life, and there is no chance of coming back and choosing the options that you had left earlier. So my dear students, whatever the situation in your life, when you have to take the decisions, just be cool and calm, then think deeply, use your senses, and then take your decision. This is the message that is beautifully portrayed through this poem. I hope you got it. I will meet you again with a new topic. Till then, goodbye. And if you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for watching this video. Have a good day ahead.